Hello everyone. I welcome you all on behalf of Eden IAS. I hope all of you are good and with fine health. Friends, in this video, we are going to discuss about the right approach, the right strategy to score 300 plus marks in your optional subject. So if you have opted history as your optional subject and you're still in dilemma whether you should go for history as your optional subject or not. So in that case, this video is going to be very important for you, because in this video I will discuss about the program, I will discuss about the optional, I will discuss about the syllabus, I will discuss about the exam pattern, I would discuss about the right strategy, I would discuss about the practice methodology, I will discuss about the sources, and I would discuss about how I would help you in scoring 300 plus optional. So there are various dimensions I am going to discuss about here in this video. Friends, why there's so much emphasis on the 300 plus score to achieve in optional subject, right? So first we should understand why we require this number, or why we require to achieve such a high score. Okay, so if you look at the scores of toppers, so you will find that some subjects are game changers. Okay, so you have an idea also that few subjects like GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, आप कितना भी मेहनत कर ले, it is very difficult to score even 120 plus. Fine. So that's why it's very rare that you will find that the strategy to achieve 120 plus in all these subjects, because it's almost like impossible. ठीक है, हाँ मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आएगा नहीं, but हाँ it's very rare. Okay, but if you have right strategy and right approach, then you can score well in other subjects like ethics, essay, and optional subjects. Okay. So whenever you look at the scores of toppers, that's why I'm saying that these are the game changers, and out of 250 it's very simple to achieve, or it's very easy to achieve 125 plus marks in ethics, 140 plus marks in essay, and in optional subject if you have right strategy you can score 300 plus. It means 150 plus score out of 250. It means one paper is of 250, to out of 500 you can achieve 300 plus. So suppose you have achieved 300 plus marks in optional, essay 140 plus, and ethics 125 plus, then you are far more above than the average score achieved by other students. So in this sense, this session is for history optional, so I would discuss about here how to achieve the score of 300 plus in history optional, right? So first of all, we should understand all about the history optional, and for that we need to understand the syllabus and paper. Okay, so let's have an overview of history optional paper division. ठीक है, तो ध्यान से देखना पेपर डिवीजन किस तरह से हिस्ट्री ऑप्शनल का. हिस्ट्री ऑप्शनल इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर. Okay, paper 1 consist of two sections. Okay, though they are not clearly mentioned or demarcated, but I will tell you the division of ancient and medieval India of paper 1. So paper 1 is divided into two sections, ancient India and medieval India. जो पढ़ चुके हैं बेसिक्स उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो I must tell you that the division of ancient and medieval India is based upon that standard timeline, right? So from prehistoric period, like when we have the information of early men, to approximately 750 CE. तो ये जो period है, that period comes under ancient India. For medieval India, we have roughly 750 plus to approximately 1750. तो कहा जाता है कि लगभग
1200 से 1800 मोटा मोटा, ठीक है, दैट पीरियड टॉक्स अबाउट द मिडिवल. फर्दर इसको अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर मिडिवल पीरियड में डिवाइड किया गया, लाइक 750 to 1200 अर्ली मिडिवल and 1200 to 1800 later medieval. ठीक है, we'll discuss about that later. Paper 2 consists of modern India. Okay, obviously it's 1800 plus 750, 1750 onwards, you can say that. Okay, and modern world. So 18th century onwards, the major events comes under modern world. ठीक है, so we will have the overview of syllabus to understand the various topics which comes under ancient India, medieval India, modern India and modern world. Okay, so here you will find out the syllabus part. So once you go through the syllabus, you will find out the various topics, and I would discuss here the syllabus in the very original form which is released by UPSC. Okay, so let's have a look at the syllabus. ओके तो आप क्या करेंगे, आपको सिलेबस का जो सबसे पहले आपको जो बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने अभी तक यूपीएससी जो नोटिफिकेशन रिलीज करती है उसमें जो सिलेबस दिया है नहीं देखा है तो प्लीज यू शुड गो थ्रू विद दैट सिलेबस, बिकॉज दिस इज द validated and the most authenticated syllabus given by the UPSC. Okay, so here you will find history paper 1. So there are two papers, paper 1 and paper 2. Okay, so paper 1 consists of, तो सबसे पहले I will tell you that paper 1 consists of here you will have the overview, like paper 1 consists of ancient and medieval India. Okay, so collectively there are 24 topics. ओके अभी मैं जब सिलेबस दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें 24 टॉपिक्स होंगे, तो आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू सो दैट यू कैन हैव आइडिया अबाउट द माइक्रो टॉपिक्स ऑफ सिलेबस. ठीक है, तो एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया दे द नंबर ऑफ टॉपिक्स आर इक्वल इन बोथ द सेक्शंस. एंशिएंट में 24 टॉपिक्स, सॉरी एंशिएंट में 12 टॉपिक्स एंड अगेन मिडिवल में 12 टॉपिक्स. ठीक है, तो इट डज नॉट मीन दैट द लेंथ ऑफ द सिलेबस इज सेम with respect to the content of ancient and medieval, that is different. ठीक है, but हाँ number of topics की बात करें तो they are same. In paper 2, तो paper 1 में कितना टॉपिक है, 24 टॉपिक्स. पेपर 2 में कितने टॉपिक्स हैं, 27 टॉपिक्स. Out of 27 topics, 15 topics are dedicated to modern India and 12 topics are dedicated to modern वर्ल्ड. तो आप देखेंगे मॉडर्न वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि एंशिएंट एंड मिडिवल में टोटल टॉपिक्स कितने हैं, 24, 12 फॉर एंशिएंट, 12 फॉर मॉडर्न. एंड पेपर 2 में कितने टॉपिक्स हैं, 27, 15 फॉर मॉडर्न इंडिया एंड 12 फॉर मॉडर्न वर्ल्ड. अब देखते हैं कि सिलेबस में माइक्रो टॉपिक्स एंड किस तरह से टाइमलाइन को डिवाइड किया गया. ठीक है, नाउ ओके सो topic number 1, 2, 3, 4. So it will initiated considering the ancient India in mind. Okay, so as simple as that, the entire syllabus division is prepared according to the timeline. ठीक है, तो मतलब simple, paper 1, paper 2, section 1, section 2, section 3, section 4. ठीक है, all paper 2. paper 1 section 1 मतलब ancient India और उसी में क्या होगा, सेक्शन 2 मिडिवल इंडिया. मिडिवल इंडिया के बाद कौन सा टाइमलाइन, मॉडर्न इंडिया एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज कलेक्टिवली ऑल टुगेदर इज डिफरेंट इवेंट. ठीक है, तो नाउ हैव अ लुक एट दिस द नेम्स ऑफ टॉपिक और द टाइटल्स ऑफ टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सोर्सेस. तो सोर्सेस में वी नो दैट देयर आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस, तो दे कम्स अंडर द पेपर 1. फर्स्ट टॉपिक इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक, सेक्शन 1 में आता है एंशिएंट इंडिया में. तो सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस एंड इन लिटरेरी सोर्सेस देयर अगेन फर्दर डिविजन्स लाइक the indigenous sources and foreign accounts. ठीक है, second topic is like prehistory and proto history, like the period before the writing is invented. ठीक है, यहाँ पर deciphered writing थी, अगर deciphered नहीं हो तो it's part under proto history. ठीक है, तो ये period है. then Indus Valley civilization, megalithic culture,
Aryan and Vedic period, period of Mahajanpadas, Mauryan Empire, and you will see that the entire syllabus of paper 1 will extend up to 24 topics. तो 12 topics जब हम कर लेंगे देखेंगे. 8th most post modern period, that's the Indo Greeks, Shakas, Kushanas invasion also. Then 9th topic, early state and societies in Eastern India, Deccan and South India. 10th Gupta, Vakataks and Vardhanas. And 11th regional states during Gupta era. And 12th themes in early Indian culture history. And जैसे ही आप 13th नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे आप देखेंगे अर्ली मिडीवल इंडिया 750 टू 1200 पीरियड. इसका मतलब है कि अब टॉपिक नंबर 13 से नाउ द सिलेबस ऑफ मिडीवल इंडिया स्टार्टेड. ठीक है, तो 12 तक जो सिलेबस है दैट इज कवर्ड अंडर एंशिएंट इंडिया. दैट एंटायर सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया इज कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू 12th टॉपिक. इतना समझ में आया? ठीक है, तब 13 से स्टार्ट होगा मिडिवल इंडिया का सिलेबस. ठीक है, सो अर्ली मिडिवल इंडिया 750 टू 1200. दैट्स. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप इन टॉपिक्स को देख रहे होगे 13, 14, 15, 16, तो यूपीएससी ने कितना क्लियर डिमार्केशन किया है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, तो आप देखेंगे कि टॉपिक नंबर 13 से मिडिवल स्टार्ट होता है. तो अर्ली मिडिवल पीरियड 750 टू 1200, कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया 750 टू 1200. इसका मतलब है कि दैट टॉपिक नंबर 13 कवर्स द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड 750 to 1200 part specifically talks about the philosophy, religion. It means the cultural tradition of medieval India. तो ध्यान रखना कि जिस तरह से यूपीएससी ने इतना ब्यूटीफुली सिलेबस को डिमार्केट किया है, तो आपको भी सिलेबस को 1 by 1 वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा. और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इस डिमार्केशन को सही से समझ पाएंगे, हर एक टॉपिक की डेप्थ में जा पाएंगे और उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो 13th and 14th टॉक्स अबाउट द period of 750 to 1200. Clear? Now coming towards the topic number 15th and 16th. ठीक है, तो आप देखोगे कि 15th, 16th and 17th. 15th talks about the 13th century, means this 15 topics ask us to prepare for the 13th century, like establishment of Delhi Sultanate, economic, social and cultural consequences during that period, then foundation of Delhi Sultanate and early Turkish sultans. And in topic number 16 you will find that the 14th century, the Khalji revolution, Alauddin Khalji's take over and then Muhammad bin Tughlaq and Firuz Tughlaq's era. तो 13th and 14th century दो अलग अलग सेंचुरी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है. और 17th में आप देखोगे कि 17th में 13th and 14th सेंचुरी के कल्चरल ट्रेडिशंस की बात की गई है. तो मतलब 15th, 16th and 17 collectively talks about the social, economic, political and cultural traditions. ठीक है, तो 15, 16 collectively talks about the social, economic, political and 17 talks about the cultural tradition. Right? Here society, culture, economy means agricultural production and all these things. तो कुछ पार्ट है जो 16, 17 में economic का होगा और कुछ पार्ट 17 में है. There is no rigid demarcation of the syllabus or the content. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 18 में देखते हैं the 15th and early 16th century. तो 18 टॉपिक है वो किस टाइम पीरियड की बात करता है? the 15th and early 16th century. देखो अगर आप किसी और ऑप्शनल से कंपेयर करोगे सिलेबस को, ठीक है, you will find that there are different content with respect to the sectional division ऑफ एवरी ऑप्शनल. लेकिन हिस्ट्री में जब आप बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री में सेक्शंस का डिवीजन, टॉपिक्स का डिवीजन किस तरीके से? टॉपिक्स का डिवीजन टाइमलाइन के बेसिस पे. इसलिए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइमलाइन को समझना, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को समझना. ठीक है, तो इसलिए नाउ विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टाइमलाइन. ठीक है, the 15th and early 16th century talks about society and culture. ठीक है, तो here topic number 19, that is the syllabus coverage up to the establishment of Mughal Empire. ठीक है, 20th से start होगा मुगल एम्पायर, 20th, 21, 22, 23 and 24. ठीक है, up to the decline of Mughal Empire and the ascendancy of Maratha. ठीक है, यहां तक आप देखोगे
कि 12 topics and 12 topics, तो 24 topics of paper 1 that includes ancient India and medieval India, covers the history of India up to the advent of Europeans. ठीक है, और यहाँ यहीं से सिलेबस फिनिश होता है पेपर 1 का। अब देखेंगे पेपर 2 का कितने टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको, देयर आर 27 टॉपिक्स, तो 15 टॉपिक्स आर डेडिकेटेड टू मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, इट मींस एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया। वी नो दैट द पोर्टुगीज, डच, डेन्स, ब्रिटिशर्स, ये सब इंडिया में आए थे, तो उनके बारे में आपको देखना होगा। देन ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, देन आउट ऑफ दिस यूरोपियंस दैट ब्रिटिश एक्सपेंडेड इन इंडिया, तो उसके बारे में यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। देन थर्ड, अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, इट मींस दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम डायरेक्टी टू द डायरेक्ट कंट्रोल। तो ये सब बातें थर्ड टॉपिक में बताई गई हैं कि हमें ये पढ़ना है। फोर्थ, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। फिफ्थ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। सिक्स्थ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड अदर एरिया। तो देखिए आप कितना डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली, माइक्रो टॉपिक तो जरूर पढ़ लेना, लाइक द राइज ऑफ प्रेस, लिटरेचर एंड पब्लिक ओपिनियन। तो ये सब आपको, क्योंकि टॉपिक्स को स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल दैट। नाउ सेवेंथ, इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल। एट्थ, फैक्टर्स लीडिंग द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल। जो लोग आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा जीएस पेपर के लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया है टाइमलाइन का, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, ठीक है। तो दैट विल टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9th, राइज ऑफ गांधी, एंड वी विल see the glimpse of all these topics like politics of separation, and here you will find that the topics of modern India ends with the topic number 15. So 15 topics are dedicated out of 27 to मॉडर्न इंडिया, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर डेडिकेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आप देखोगे, और इसमें जो मॉडर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, उसमें अप टू द 12 यू विल फाइंड दैट टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड विद रेस्पेक्ट टू द ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस विद मेंस, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक जो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी 12 तक मॉडर्न इंडिया का सिलेबस फिनिश होता है। 13, 14, 15, टॉपिक नंबर 13, 14 and 15, this covers the syllabus of post independent India, ठीक है। तो largely डिवीजन कैसे किया गया है पेपर 1 का, एंशियंट मिडिवल। पेपर 2 का डिवीजन कैसे किया गया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। बट हियर there is sub part also, that is post independent India. It does not mean that paper 2 covers only modern India and world history, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न इंडिया में 13, 14, 15 तीन टॉपिक्स हैं that talks about the syllabus coverage of पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा खुश होने की जरूरत नहीं है जिनको लगता होगा शुरुआत में कि सर ने मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करी, इसका मतलब हमें केवल इंडिपेंडेंस तक पढ़ना है, इंडिपेंडेंस के बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हाँ, there's also a fact that there is a very less weightage of post independent India's event, ठीक है। बट दो पोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट इंडिया के जो इवेंट हैं उसमें भी हम, जब हम आगे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तब आप देखोगे कि जब हम ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया स्पेसिफिकली बात करें, तो करंट इवेंट वाला जो पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, उसमें करंट इवेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, बट जो करंट इवेंट के साथ जुड़े हुए केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, और करंट इवेंट के साथ जो केसेस जुड़े होते हैं वो मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉपिक नंबर 16। तो एक लेट्स हैव अ glimpse of that these topics. Topic number 16, that enlightenment and modern ideas. It means you have to study thoroughly about the major ideas of Kant and Rousseau, and along with that rise of socialism. So it means you have to study Marx and Engels also. Then origins of modern politics, यूरोपियन स्टेट सिस्टम क्या था, नेशन स्टेट क्या था, अमेरिकन सिविल वॉर, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो ये सब टॉपिक नंबर 17 में कवर होते हैं। तो थ्रू दिस टॉपिक यू विल हैव द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मतलब कि जैसे आप पढ़ते होगे पॉलिटिक्स में वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या था, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम कैसे था, मैग्ना कार्टा एंड ऑल, तो ये सारा पार्लियामेंट्री रिफॉर्मर्स, फ्री ट्रेड सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव एन आइडिया इन टॉपिक नंबर 17. Then topic number 18 that talks about the industrialization. 19 you have to learn about nation state system. Then in topic number 20 imperialism and
कॉलोनिज्म, और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ये these event play a very important and critical role in world history, so that they are very important topics, right? So ये सब cover होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, जो last topic होगा वो कहाँ पर end होगा? That will end at the disintegration of Soviet Union, ठीक है? तो LPG reforms तक हमें पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि disintegration of Soviet Union and rise of unipolar world, that these topics ends up with the end of the Cold War and rise of US as lone power in the world, right? So ये 27 टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि 27 टॉपिक्स में 15 टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया के हैं, 12 टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। सिमिलरली पेपर 1 में 24 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स एंशिएंट इंडिया को डेडिकेटेड हैं, 12 टॉपिक्स मिडिवल इंडिया को डेडिकेटेड हैं। तो 24 टॉपिक्स। दिस इज हाउ वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द syllabus coverage of all the 4 sections, ठीक है। now we'll talk about the next stage of preparation, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा syllabus, देखा हमने माइक्रो टॉपिक्स देखे। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब देखो एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझना, क्योंकि हिस्ट्री का जो एग्जाम पैटर्न है इज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शनल्स, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऑप्शनल मैच करते हो, लेकिन इट इंक्लूड्स द एग्जाम पैटर्न ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स, ठीक है। सो लेट्स हैव लुक एट the exam pattern, but I will show you through the chart, but before that you will have a little glimpse of the overall exam pattern क्या है पहले, इसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको कि एक्चुअली इस एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू क्या है, ठीक है। तो टोटल जो है अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके पहले आप पूरा पैटर्न समझ लो क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है ऑप्शनल का, ठीक है। उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं 8, ठीक है। देयर आर 8 क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो इट मींस देयर आर 8 क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आप देखोगे कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 5, सॉरी सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, और ये जो 8 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। अब सेक्शन 4 ए में 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चंस हो गए। तो 5 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस हो गए कंपलसरी एंड 3 क्वेश्चंस में आपको चॉइस है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें, यानी कि आपने 8 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब बचे कितने क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस बचे। अब 6 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि सेक्शन बी में आपके पास 3 क्वेश्चंस और सेक्शन ए में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन इन 1 सेक्शन एंड 2 क्वेश्चन इन अनदर सेक्शन, और you will have the, suppose you will have the interest in section A, but you have to do more questions in section B because you are not aware about the answer of the सेक्शन ए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको 1 क्वेश्चन यहाँ से करना होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से करना होगा, ठीक है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये है एक की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब देखो की यही है कि आपको पता है कि एक सेक्शन पहला क्वेश्चन कंपलसरी और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन कंपलसरी है। तो जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं इसमें से एक क्वेश्चन सेक्शन ए से करना है, दो क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं, या 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं और एक क्वेश्चन सेक्शन बी से करना है। तो इन्फ्रेंस क्या निकलता है? इन्फ्रेंस ये निकलता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमें इक्वल नहीं करना होगा। इसका मतलब अगेन कि किसी एक सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आउट ऑफ 250 मार्क्स यू हैव टू मेक अटेम्प्ट 1 सेक्शन मोर देन द अनदर सेक्शन। एक किसी सेक्शन में 100 का मार्क्स का करना होगा और एक किसी एक सेक्शन में 150 मार्क्स का करना होगा। तो अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी निकल के आती है? यहाँ से स्ट्रेटेजी ये निकल के आती है कि आपको हर एक पेपर में 2 सेक्शन है, तो इट कुड बी वेरी पॉसिबल दैट every person have the same interest,
in both the sections of like ancient and medieval. But if I talk about, and I have the vast experience when I deal with the students, so they find that either they have more interest in ancient India or more, I'm talking about more interest, because it's not possible to have the equal interest in both the papers, as simple as that. ठीक है, taking the present like a practical example, तो ancient India और medieval India में कोई एक तो होगा जो अच्छे से आता होगा, ये जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता होगा। तो जब आपको पता है कि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है किसी एक पेपर में, मतलब एक सेक्शन में, या तो एंशिएंट में या मिडिवल में, ठीक है। सो व्हाई डोंट यू हैव दैट स्ट्रेटजी, सो दैट you, if you have more interest in one section, then you should attempt more questions in that section, ठीक है। सो अब देखते हैं कि जो मार्किंग है वो कैसे है, ठीक है। तो दिस इज द पेपर 1 वेयर यू फाइंड दैट देयर आर 8 क्वेश्चन। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का कि दिस क्वेश्चन नंबर 1, देखो मैंने बताया ऑप्शनल इज गेम चेंजर, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 इज गेम चेंजर इन पेपर 1। कैसे? देखो 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं सब पार्ट, ठीक है। तो मतलब 20 क्वेश्चन that includes 50 marks. It means that every question has 2.5 marks weightage. Okay, so अब 20 क्वेश्चन है। अब इस 20 क्वेश्चन में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 15 to 16 क्वेश्चंस, ठीक है, कितना? On an average, if you have done 15 to 16 questions, that it will be far better, ठीक है। 15 to 16 questions, तो ये है गेम चेंजर, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये जो 20 मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब है कि यू विल बी गिवन, अभी मैं पेपर दिखाऊंगा आपको, तो आप पेपर में देखोगे कि इनको एक्चुअली पेपर में पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो देयर आर 20 लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इंडिया का मैप दिया होगा और 20 लोकेशंस को स्पॉट किया गया होगा, एंड यू हैव टू राइट 20 to 30 words about that location. Generally they are prehistoric sites, ठीक है। prehistoric मतलब that's it talks about the paleolithic sites or the mesolithic sites or the neolithic sites, ठीक है। तो largely they ask about the prehistoric sites। prehistoric sites में Paleolithic sites हैं, Mesolithic sites हैं एंड Neolithic sites हैं। आउट ऑफ दीज 3 sites, Neolithic sites के बारे में कम पूछा जाता है, और प्री हिस्टोरिक का वो पार्ट जिसमें Paleolithic और Mesolithic sites उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। वो इसलिए क्योंकि Neolithic पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आते हैं, जबकि प्री हिस्ट्री का वो पार्ट, एंशिएंट इंडिया में प्री हिस्ट्री का वो पार्ट, ध्यान से सुनना, यहाँ पर Paleolithic एंड Mesolithic पीरियड की बात की जाती है, वहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम आते हैं, नहीं आते ऑलमोस्ट, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड की बात भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों में ही न्यूलिथिक का फिर से कल्चर स्टार्ट हुआ, सब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, अदरवाइज न्यूलिथिक पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे, ज्यादा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आते थे। तो अब ये जो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। अब ये जो 2.5 नंबर का मार्किंग है इसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें 1 mark is dedicated to the identification of the site, ठीक है। तो सपोज कोई साइट दी गई है, आपने पहचान लिया कि साइट इनाम गांव है, और इनाम गांव का आपने साइट को आइडेंटिफाई किया है और इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लाइक आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया है, लेकिन उस साइट का अगर आपने सिग्निफिकेंस भी बताया है तो इन दैट केस यू विल बी गिवन 1.5 मार्क्स मोर। तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को 10 से 12 साइट्स के बारे में सिग्निफिकेंस पता होता है, but rest of the sites they do not know about the significance of the site or the more information about the site. They know only the identification, they only identify the sites and they only mention the district or the state name. Okay, so that is very simple, because now UPSC is providing the political map of India, तो स्टेट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है फर्दर क्लासेस में, तो आप उसको भी टैकल कर लोगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल देखते हैं कि एक्चुअली हमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए
एग्जाम को रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन इन 3 सब पार्ट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन विल बी ऑफ 15 एंड 15 मार्क्स। सेम पैटर्न फॉलो होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। एवरी क्वेश्चन विल हैव 3 सब पार्ट्स एंड एवरी सब पार्ट विल डेडिकेटेड टू 15 20 15 15 का पैटर्न फॉलो करेंगे। देन नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, हियर दैट पैटर्न विल बी डिफरेंट बिकॉज यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के 20 सब पार्ट्स थे, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसके 5 सब पार्ट्स होंगे, एवरी सब पार्ट्स विल कैरी 10 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 5 का सेम होगा, 50-50 मार्क्स के होंगे। लेकिन देखो एवरी क्वेश्चन विल हैव द मैक्सिमम मार्क्स वेटेज ऑफ 50। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सब पार्ट्स का यहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कंपेयर करोगे आप, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन नंबर 1 हैज 20 सब पार्ट्स, क्वेश्चन 5 के 5 सब पार्ट हैं, एवरी सब पार्ट विल कैरी 10 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का 8 20 15 15 20 15 15। इसका मतलब ये कि पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 3 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 7 8 इनका पैटर्न सेम है, 20 15 15 20 15 15। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये इसको बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमको पता है कि 20 15 15 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 20 15 15 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, व्हाई, बिकॉज यू विल फाइंड द डिफरेंस इन पेपर नंबर 2। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 10 मार्क्स का, जो क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 1 में फॉलो हुआ था, राइट। लेकिन आप देखोगे कि जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उसमें पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 will carry 50 marks, but their subsections will carry different marks, like 20 20 10। ये पैटर्न फॉलो हुआ है, 20 20 10। तो पेपर 2 question number 2 3 4 6 7 8 will have the pattern of 20 20 10, and you will find question number 6 7 8 and 2 3 4 in paper 1 will have the pattern of 20 15 15। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैटर्न एग्जाम का क्या है, हमें कितने मार्क्स के लिए लिखना है। क्योंकि every here every marking pattern will have limited set of restriction with respect to words। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो आप 15 मार्कर के लिए लिख रहे हो वही 10 के लिए भी चलेगा और 20 के लिए भी चलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि 10 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए you will be given 2 pages, 15 के लिए you will be given 3 pages and 20 के लिए you will be given 4 pages। ठीक है, तो आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। लाइक फॉर पेपर 2 you will have different techniques and different strategy for answer writing, and for paper 1 that would be different technique and strategy। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न भी डिफरेंट है। पेपर 1 में जो नॉन कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं उनके लिए 20 15 15 का पैटर्न फॉलो होता है, एंड जो पेपर 2 है उसके लिए 20 20 10 का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेज। ओके, दैट्स we have discussed about the exam pattern. Now we'll discuss about the what we are going to discuss about, that is the sources। लेकिन before that I will show you the previous year question paper so that you can have idea कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो देखते हैं पेपर 1 of 2023। ठीक है, जैसे बताया था कि इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट अंडर द इंस्ट्रक्शंस इट इज मेंशन्ड दैट देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस, out of that you have to attempt only 5 questions। okay, is it visible? 5 questions। now out of these 5 questions, 1 and question number 5 are compulsory, and you have to choose at least 1 question from each section। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हैं तो आपके जो 3 क्वेश्चन किसी एक सेक्शन से कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 1 सेक्शन आपको करना होगा, 1 क्वेश्चन ईच सेक्शन से, और उसके बाद जो बचा हुआ 1 क्वेश्चन है वो किसी एक सेक्शन से पिक करना होगा, एंड दैट इज हाउ दैट्स अ प्रायर स्टडीज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आप ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कंपल्शन यू आर चूजिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, दैट शुड बी योर आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, एंड दैट्स यू हैव टू मेक दैट स्ट्रेटजी बिफोर द एग्जाम। ठीक है,
तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप देखोगे कि मैंने बताया था कि आपको पहले क्वेश्चन में कुछ 20 साइट्स दी जाएंगी। देखो, न्यूलिथिक साइट, then hold of Gupta coin, site of mother child terracotta figure, site of botanical remains, Harappan site with mud brick platform, modern reservoir site। तो इस तरह की साइट दी होंगी जिसके बारे में आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। तो कुछ इस तरह से मैप दिया होगा, ठीक है। 2020 ऑनवर्ड्स यूपीएससी इज गिविंग द पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अदरवाइज ये पहले फिजिकल मैप हुआ करता था तो काफी टफ होता था बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में एरर्स भी होते थे, फ्लॉज भी होते थे, तो यूपीएससी उन साइट्स को टेक बैक भी करता था, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो म्यूजिक एज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बी के बारे में, इंडस हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड, हाउ डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजी एंड ऑल दीस थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू discuss about the PYQ, okay? That is what we will do in different video and different class, okay? So here we will discuss only about the exam pattern, the nature of question and how the question paper is defined in the question paper, okay? The questions are defined in such a manner. So 3A, 3B, 3C, evaluate the status of women in the Gupta period as compared to the pre-Gupta period. This is my humble request that you should start your journey with analyzing the PYQs. Otherwise it's like that's the you are following certain path without the direction, okay? So now question number 4, A, B, C. So it is the end up of section A. Then section B, question number 5, that is compulsory. It has 5 subparts. To discuss the various proponents of Indian feudalism and this examine the defects in Alberoni's assessment of the Indian society, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर तो आप देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि आप देखोगे here क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। तो मैंने बताया था कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन ए रिप्रेजेंट्स एंशिएंट इंडिया व्हाइल सेक्शन बी रिप्रेजेंट्स मिडिवल इंडिया। लेकिन आप सेक्शन ए का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए और पहला क्वेश्चन देखिए, लाइक एनालाइज द टेनेट्स, स्प्रेड एंड इंपैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, ओके, एंड हाउ फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलास बिकेम रिफाइंड, ठीक है। तो चोला पीरियड, भक्ति पीरियड, ठीक है, दे एक्चुअली बिलोंग टू द अर्ली मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो होता क्या है कि आप सोचते हो कि पूरा पेपर जो सेक्शन नंबर ए है दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एंशिएंट इंडिया। लेकिन क्या है, यूपीएससी कई बार ऐसा भी काम करता है कि आपको सरप्राइज करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे दैट सेक्शन ए बिलोंग्स टू एंशिएंट इंडिया बट द क्वेश्चन बिलोंग्स टू अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है। तो और अब ये फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स वी फाइंड दिस पैटर्न, ठीक है। सेक्शन बी में इट्स कंप्लीटली लेटर मिडिवल एंड few questions could be there from the early medieval also, ठीक है। तो like discuss the various proponents of Indian feudalism, examine the defects in Alberoni's assessment of the Indian society. So I will make some more videos regarding the right strategy with respect to the hot spots, hot topics, important topics and the importance of various resources, ठीक है। तो इसलिए that's why I'm not going to discuss about the role of Alberoni's book or the role of the foreign accounts, ठीक है, क्योंकि that would be the different approach video with respect to the hotspot or the trending topics, ठीक है। So now I'm not talking about the hotspots here, so just have a look of the paper, question number 7A, question number 8 ABC। तो यही पेपर जो कि I have opened here paper 1, so the pattern would be like 20 15 15 20 15 15, ठीक है, clear। So now the next would be, I have said already that I would talk about the right sources, okay। So next, the resources or booklets, right? So here are some set of booklets that is important to study, ठीक है। So here the good thing is with history is that you do not have the paucity of resources, you will have bundle of resources, but actually that becomes disguise also। क्यों? क्योंकि आपके पास जब ज्यादा सोर्स होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट सोर्स। सो आई टेल यू सम ऑफ द दैट यू शुड हैव सम लिमिटेड रिसोर्सेज टू स्टडी, क्योंकि यू कैन गो फॉर फर्दर मोर एंड मोर रिविजन्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा आप डाइवर्ट होगे, उतना ज्यादा आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने रिसोर्सेज को, और उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी आपको, प्रॉब्लम्स फेस होंगी आपको रिवाइज करने में, ठीक है। तो now we will categorize our resources into 3 parts. One, the
NCERTs, ठीक है. Second would be the IGNOU BA standard material and then standard books. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वही परचेस करिएगा, दैट इज द प्रिंटेड बुक्स. ठीक है, डू नॉट गो विद द सप्लीमेंट्री मटेरियल. तो एनसीईआरटीज में मैं अगर बात करता हूँ तो एनसीईआरटीज में अगर सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे तो आप नोट भी करते रहिएगा. लाइक फॉर एंशियंट इंडिया कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं नोट कर लीजिए. 6th क्लास, 11th class, and if you have the book of R.S. Sharma then it will be sufficient. For modern India, okay, so for medieval India, you can go for 7th class NCERTs and 11th, the second part of 11th class, and these NCERTs must be old NCERTs first. You should go for, they are very beautiful designed with respect to the concept clarity and the timeline also. ठीक है, new NCERTs करने से पहले old NCERTs करिए and you can supplement with new NCERT. ठीक है, तो 6th, 11th and if you have R.S. Sharma then good. For medieval India you can go for class 7th NCERTs and 11th. For modern India you should go for 12th class NCERT and for modern world NCERTs of class 9th and 10th, old NCERTs would be sufficient. IGNOU BA standard material तो आपको एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग बुकलेट्स मिल जाएंगी. यू कैन हैव दैट, परचेज दैट फ्रॉम मार्केट. ठीक है, क्योंकि अर्ली मिडीवल इंडिया, ओके, IGNOU material is best. You will not have some questions, you will not get short some questions or some content also in the standard books given by Upender Singh like early medieval India and Satish Chandra also. That material you will be given in the IGNOU material. ठीक है, then we'll talk about the standard books. For ancient India you can go for ancient India book of Upender Singh. ठीक है, clear? This is non-negotiable. Okay, that is the very essential and elementary book, and you can go for book of Ranveer Chakravarti for ancient India. That is for reference only. There is no need to go for thorough study. For medieval India, there are two books given by Satish Chandra. That book is different from the book we read for mains examination. The medieval India by Satish Chandra is different from the medieval India by Satish Chandra फ्रॉम सल्तनत टू मुगल इंडिया. तो इसका कुछ टाइटल ऐसे दिया होगा, फ्रॉम सल्तनत टू मुगल. और टाइमलाइन जो फर्स्ट एडिशन, जो फर्स्ट पार्ट होगा इस बुक का, उसका कुछ टाइमलाइन दिया होगा 1206 टू 1526, और जो सेकेंड बुक होगी उसका टाइमलाइन दिया होगा 1526 टू 1748. ठीक है, क्लियर? सो there are two books for medieval India. Now we'll talk about books for modern India. तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप जो जीएस मेंस के लिए बुक पढ़ रहे हो, जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुक पढ़ रहे हो कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो आप पढ़ते रहो. ठीक है, अदर देन दैट आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स फॉर ऑप्शनल, दैट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट प्लासी टू पार्टीशन by शेखर बंदोपाध्याय. Second book, that is the Modern India by B.L. Grover. ठीक है, other than that you can have a reference book also. India's struggle
for Independence by Bipin Chandra. So that's all about modern India part 4. Then if you want to study about the post-independent India, other than your NCERTs and all the basic books you have, then you can have a reference book like India Since Independence by, again, Bipin Chandra, and India After Gandhi is also a good book by Ramchandra Guha. Okay, so now do not get confused that there are a number of plenty of books. So I will again tell you that there are some books I have mentioned, but you should not read it thoroughly. जैसे रामचंद्र गुहा thoroughly नहीं पढ़ना है आपको. इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये आपको पढ़ना है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा आपको. मॉडर्न इंडिया के लिए दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय एंड मॉडर्न इंडिया बाय बीएल ग्रोवर. अगर प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लोगे तब भी सफिशिएंट है, बट बीएल ग्रोवर अपने बुक शेल्फ में रख लो, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव सम हिस्टोरियोग्राफी आल्सो गिवन इन द बीएल ग्रोवर बुक. ठीक है, तो जितना रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टडी the entire book from word to word. ठीक है, because here is the role of mentors. ठीक है, तो यहाँ पर ही रोल स्टार्ट होता है मेंटोर्स का, क्योंकि मेंटोर्स जो अपने नोट्स देते हैं, लेकिन लाइक आई प्रोवाइड द नोट्स ऑफ crux of all these entire books. Then in that case, if you once read one book which is essential, then you do not need to go for the further books of references, but for just the sake of satisfaction, you can purchase the books and keep it in yourself. Otherwise the notes would be sufficient, because it will churn out the very important part of these references books in my notes. ठीक है, now coming to, so we have all the resources. Now coming to the modern world, जो कि अभी complete नहीं हुआ है इस पोर्शन में. ठीक है, तो now we'll talk about the resources for modern world. ठीक है, तो modern world का so for modern world you can go for two books. Okay, देखो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्लास 9-10 that would be sufficient to make your concept clarity. ठीक है, but that's not required for history optional. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको दो बुक्स और पढ़नी पड़ेगी. एक बुक होगी आपकी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय नॉर्मन, but it would not actually cover the entire syllabus of world history. ठीक है, ये केवल 20th century को स्टडी करने के लिए that is one of the best books. Okay, so 20th century onwards अगर आपको पढ़ना है तो you can go for normal view, but before world war or 20th century the best book for to study is modern history of modern world by Gyan and Mathur. तो अगर if you study before 20th century from Gyan and Mathur and 20th century through normal lab, that would be sufficient. There is no need to further study for world history. Okay, so we have two old NCERTs, take a class 9th and class 10th, and then we have two standard books. Okay, so now let's move towards our new step, the significance of history optional. तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप इन चीज़ों को कि it's not about history optional, it's about why history optional is important. ठीक है, every optional is important, but we should understand with respect to the importance of this optional in exam. ठीक है, तो there are various trends, there are various features and characteristics, there are important points also how to choose optional, but I will tell you here, once you have chosen history optional and if you are looking forward to choose history optional, then what are the important points you can take into consideration. पहला,
that's it's actually overlap with other GS सब्जेक्ट्स। कैसे मैं बताता हूँ। पहला GS1 की बात करें तो GS1 में आप देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, ठीक है, क्योंकि प्री में ऑलरेडी नो दैट हिस्ट्री हैज वास्ट सिलेबस, तो एंटायर हिस्ट्री with respect to pre is a subset of the syllabus of history optional, ठीक है, there is no need to discuss about the pre examination, but when we talk about the mains examination तो it actually overlaps with other GS subjects how, ठीक है, ये समझना है। तो GS पेपर 1 में आप देखोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट, history, so history actually the syllabus of history is a subset of the syllabus of history optional, very obvious। Then when we talk about the geography, then once you read the syllabus of history optional, initially you will find that the entire geographical setting is discussed in history. When you read geography optional also you will read about the history, so history and geography are interrelated, so there are various aspects of the environment, ecology, climate that impacts the evolution of man, that impacts the society also, so we will have the basic understanding of geography also while we read history। Now we'll talk about the other aspect like social, like society and social issues, so you will have the basic idea about the evolution of society and social issues pertaining to this syllabus in हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जीएस पेपर 1 कवर हो रहा है। नाउ कमिंग टू द जीएस पेपर 2, तो अगर आप जीएस पेपर 2 देखोगे तो इसमें पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स, नॉट एंटायर पॉलिटी बट लाइक द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, नेशन स्टेट एटसेट्रा एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो ये सब क्या टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री ऑप्शन में भी पढ़ोगे आप और जीएस पेपर 2 में भी पढ़ोगे। जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, नेहरूज पॉलिसी एटसेट्रा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो राइज ऑफ नक्सलिज्म, बेसिक इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के टॉपिक नंबर 13, 14, 15 में मैंने बताया था कि आप उस पर कवर करोगे, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर हो रही है। जीएस पेपर 4 की अगर बात करें, नाउ जीएस पेपर 4 की अगर बात करें तो एक टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है, द लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ great leaders, right? So here again you have an idea about the great leaders of history, ठीक है, like महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय एक्सेट्रा, ठीक है, तो you have that idea, so you can inculcate your knowledge into GS paper 4 also। Now we'll talk about the essay, ठीक है, जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हो तो यू नीड टू राइट समथिंग लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सो एक्चुअली हिस्ट्री is not going to help you in history optional but in all the papers also। Now it's not only about the overlapping, so I discussed about the overlapping part, लेकिन अगर आप देखोगे तो rising trend of marks, ये जो मार्क्स हैं आप देखोगे कि प्री में अगर आप अभी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए लास्ट, ठीक है, मेंस में आप देखोगे तो दैट रेंजेस फ्रॉम 75 टू 90 मार्क्स, राइट? तो इट कंट्रीब्यूट्स इन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस आल्सो एंड जीएस paper 1 of prelims examination, so I am talking about the 75 to 90 marks only in GS paper 1। I am not counting the contribution of the history optional syllabus into the GS paper 2, 3 and 4 and essay, right? तो ज़्यादती हो जाएगी, ठीक है। Then you will find that next that sources for history, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में, तो द पर्सन सेज दैट सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बुक्स नहीं मार्केट में मिलती हैं, किसी का संस्कृत है तो संस्कृत ऑप्शनल की बुक्स नहीं मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जहाँ पर देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअली ट्रबलसम भी है क्योंकि यू हैव नंबर ऑफ सोर्सेज, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राइट सोर्सेज ऑल्सो, ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज। तो पहला जो हमने देखा कि जीएस के अदर पेपर के साथ ओवरलैपिंग भी है, दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली सिग्निफिकेंट। देन मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक वेटेज है हिस्ट्री का,
पेपर 1 और पेपर जीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में भी. Then we have the right set of sources. Then when we write current affairs, then we find the importance of that current affairs with the lens of the historical background. Like for example, अभी recently आपने पढ़ा होगा कि that Wagner has been transferred and carried in India from London Museum. तो Wagner, I'll tell you that about the Wagner is the Shivaji's actually this weapon which was used to kill Afzal Khan. ठीक. तो अब क्या होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वागनर का इंपॉर्टेंस क्या है. न्यूज में आया, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उनको पता होगा कि वागनर का इंपॉर्टेंस क्या है, शिवाजी का इंपॉर्टेंस क्या है, और चूंकि करंट का पार्ट है और इतना इंपॉर्टेंट न्यूज है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो that's about the significance of the history optional. Then it is obviously is not very technical, so it's easy to read and to understand. ठीक है, like story. तो वो सब भी है. तो there are other various sub characteristics, so I will not get into that. Now coming to the right strategy, that is the actually most important part of this video. ठीक है. तो अब आप समझना कि ये यहाँ तक आने के लिए आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली. लाइक फॉर एग्जांपल, यू नीड फॉर राइट स्ट्रेटजी you need what? You need 5, what I say, 5 bows of actions to adopt into your strategy. अब देखो ये कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं जो एक राइट स्ट्रेटजी का पार्ट होगा. पहला पॉइंट नंबर 1 इज the right strategy will have the right knowledge. तो अभी हमने जब वीडियो का स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको अपने ऑप्शनल के बारे में पता होना चाहिए. So the first step towards the right strategy is that you should have right knowledge. Right knowledge about what? About that what you have in your exam. like एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे होंगे, what to study, what not to study. और ये सब कैसे समझ में आएगा आपको, जो आप ट्रेंडिंग देखोगे, आप एग्जाम को बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे. Once you done with the knowledge of the exam, the next step would be to choose right sources. क्योंकि आप देखो इशू ये है कि कई बार हमको पता तो होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, लेकिन क्या है कि वी आर वेरी ऑब्सेस्ड विद द नॉलेज. तो उसमें क्या होता है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ द सोर्सेज. अब इसमें यहाँ पे आपको जो डिफिकल्टी होती है कि दैट नंबर ऑफ सोर्सेज, सो यू हैव टू फाइंड द राइट सोर्सेज, दैट शुड बी द नेक्स्ट राइट स्ट्रेटेजी. तो नॉलेज तो है एग्जाम की, लेकिन सोर्सेज नहीं है, तो आपको राइट सोर्स चूज करना वुड बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. देन इफ यू हैव right knowledge, right sources, then you should have a right execution plan. अब राइट एग्जीक्यूशन प्लान के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल कि हम देखेंगे कि अगर एंशिएंट इंडिया में आप पीवाईक्यूज की वो जब ट्रेंडिंग रीड कर रहे होगे तो आप देखोगे कि एंशिएंट इंडिया में राइट नॉलेज मतलब एग्जाम देखा आपने, ट्रेंडिंग देखी आपने. व्हेन यू लुक एट द ट्रेंडिंग एंड मेक अ ट्रेंडिंग एनालिसिस, यू विल फाइंड दैट इन एंशिएंट इंडिया यूपीएससी आस्क्ड a lot about the archaeological resources, the indigenous literary resources, but now UPSC is focusing more about what? The foreign accounts. Then UPSC is focusing more upon the comparative study of Upanishads and Vedic accounts. So the strategy should be like कि अब UPSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं.
ठीक है, तो दैट शुड बी द राइट एग्जीक्यूशन प्लान। तो आपके पास एक राइट प्लान होना चाहिए किसका, एग्जीक्यूशन का, ठीक है। थर्ड दैट इज द थर्ड स्टेप्स, right execution. And when you have a right execution plan, the journey is not stops here. Fourth, that should be the right practice plan. वो कैसे होगा, जैसे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो एग्जीक्यूशन प्लान इंक्लूड्स दैट यू शुड नो दैट out of that knowledge of exam and out of the right resources, how you are executing your knowledge into paper, because ultimately you have to score what, 300 plus. तो 300 plus स्कोर कब आएगा, वर्बल वाइवा से नहीं आएगा, आपको अपनी आंसर कॉपी पे लिखना होगा. देन इन दैट केस यू शुड हैव एनरिच्ड राइटिंग स्किल. ठीक है, फॉर दैट यू शुड हैव द राइटिंग प्रैक्टिस out of a program and you should have knowledge also, you should have content also to write. तो जब एग्जीक्यूशन प्लान आपने बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी सही से कर रहे हो, लेकिन वो प्लान तभी तक रहेगा जब जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे. अगर आपने प्रैक्टिस स्टॉप करी, सो योर प्रैक्टिस प्लान शुड बी लाइक daily practice plan. It means that daily you have to study and daily you have to write. So that daily study should be supplemented with the daily answer writing. Then the second should be the weekly revision plan. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डेली आंसर राइटिंग करी है, जो भी डेली स्टडी करी है, उसको वीक में एक बार रिवाइज करना है. एंड देन कम्स टू द मॉक टेस्ट, देन द टेस्ट सीरीज, so that you can have idea about how to have the real time experience and how to solve the UPSC standard tricky questions in the test series. ठीक है, तो right practice plan includes the study plan, revision plan and the writing plan. Clear? So you should have the right knowledge, right source, right execution, right practice, and that should be end up with right enrichment time to time. It means you have to keep adding value to yourself with respect to knowledge and to your writing skills also with respect to knowledge. Okay? So you have to add current events into your notes. You have to enrich your data with respect to the last time revision. You have to enrich your data according to the demand of the question number 1 with respect to paper 1. Mapping required huge practice. Like for example, from 2020 that UPSC has given the political map of India also. ठीक है, तो आप UPSC कभी भी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है. So this for example, ancient India में लगभग मोटा मोटा 600 से 700 साइट्स हैं. तो it's not possible to learn all 700 sites. ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, you have to shortlist 150 the most important sites and you have to go thoroughly about that so that you can have 2.5 marks. 1 marks is dedicated to the identification of the site and 1.5 marks is dedicated to the significance or the information about the site. So आपके पास 150 sites ऐसी होनी चाहिए जो PYQs में आई हैं, ट्रेंडिंग है, UPSC पूछती है, हॉट टॉपिक्स में है, so that once you go through all these 20 sites, at least you are able to solve 18 to 19 questions and that is the edge marker. ठीक है, और यही होगा, मैंने बताया आपको कि ऑप्शनल गेम चेंजर है और हिस्ट्री ऑप्शनल गेम चेंजर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और पेपर नंबर 1. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द राइट स्ट्रेटेजी. ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट आई wanted to say, that you should have the proper guidelines, you should have the proper mentorship so that you can have the right strategy and right approach to score 300 plus marks. ठीक है, I will guide you, I will be available for those who are actually have opted for history optional and they are preparing for self, and those who are also who wanted to have the classes, and those also who are still searching for the right optional. In that case, I will guide you and you can talk to the management. I will be available for all those who are facing difficulties and they are choosing and they are looking forward for right mentorship to have the right strategy, because there are so many myths in the market that history is actually
is having very large levels, and it's very difficult to attain 300 plus marks in history. This all these myth. Why? Because we do not have the right strategy. Okay, we are always we follow the same pattern, the same strategy will what all others are following. That is why there are very few people who score 300 plus and become the topper. So if you want to become the topper, and if you want to have the administrative services, okay, out of all these services given in the UPSC list, right? So in that case you have to attain a very good score, and for that you should have a very different and differentiated strategy to go for, right? So for that you sometimes you require the mentorship of the teachers. Okay, so I'm not saying that this is necessary to attend the class, but if you are under the mentorship, then again it will be sufficient. Okay, so those who require class, they can also contact, and those who are looking forward for mentorship, they can also contact with the management. I will be available for the mentorship. So that is all from my side, and I will expect that you should once adopt that strategy, you will find the drastic changes in your preparation. Thank you all for having the patience to bear to the entire strategy class. Okay, thank you so much.